Vande Mataram students, after long time we are together once again. Now you are in standard 8 and standard 8 subject maths. We are going to start our chapter number 1, rational numbers. In earlier classes you have learned about the natural numbers, whole numbers, like that. And now in this standard we are going to generally natural numbers. We have to learn rational numbers. So first, I will give you intro of these numbers. Natural numbers. First, we have natural numbers. You know that natural numbers? Yes, the counting numbers are known as natural numbers. Like that, 1, 2, 3, 4, and there are how many numbers? Lots of. In short, infinity numbers, natural numbers. The collection of all natural numbers is denoted by n. You know that the natural numbers is denoted by n. Denoted by n. And in the set, we can write like that is equal to like that. Natural number is 1, 2, 3, 4, and it's continuously in infinity. So that is a natural number. Got it? Yes. Natural number is a counting number. It is starting from 1. And how many natural numbers? Infinitive natural numbers. And remember it. The smallest natural number is 1. सबसे छोटा natural number कौन सा है? 1. Okay, clear. There are infinitive natural numbers. Please remember these 2 points. The smallest natural number is 1 and there are infinitive natural numbers. Second point is here whole numbers. Yes, if 0 is included in the collection of natural numbers, then the collection is 0, 1, 2, 3 and dash is known as a whole number. It is denoted by W. Whole number is denoted by W. And in whole numbers, which number has come? Yes, if 0 are included, 0 is included in natural numbers. So 0, 1, 2, 3, 4, dash. And it is whole number and it's denoted by W. And in short, we can say which number is smallest whole number? Yes, 0. And from that we can say that all natural numbers are whole number. But all whole numbers are not a natural number. Clear? Yes. The smallest whole number is 0. And there is no greatest whole number. सबसे बड़ा कोई whole number नहीं है क्योंकि वो भी क्या है? Infinitive है. Clear? Yes. Now rational numbers. Rational number is that numbers you define that a number of the form p by q where p and q are integers and q cannot be 0 is called a rational numbers. कभी-कभी इसकी डेफिनेशन पूछाई जाती है. ऐसा कोई नंबर जिसको हम p by q फॉर्म में लिख सके. p by q फॉर्म में क्या कर सके? लिख सकते हैं. उसको क्या बोलते हैं? Rational numbers. Earlier classes we call it fraction 2 by 3, 6 by 4. It is like that. It is a rational numbers. A numbers of the form p by q. मतलब एक नंबर ऊपर होना चाहिए, एक नंबर नीचे होना चाहिए. Where p and q are integers and q cannot be 0 is called a rational numbers. Like थोड़े कुछ एग्जांपल देखते हैं हम. 0 by 5, 2 by 3 and suppose 19. It is also rational numbers. Why? Because 19 by 1 we can write p is equal to 90 and q is equal to 1. We can write like that. Suppose 0 upon 5 is a rational numbers. That means 0 upon 5. It is also rational numbers. Remember it. 0 upon 5. Because we have condition. What? Q cannot be 0. Q cannot be 0. यहाँ q p value 0 नहीं होनी चाहिए. याद रखो 0 upon 5 है वो क्या है? रेशनल नंबर है. लेकिन 5 upon 0 ये रेशनल नंबर नहीं है. इन दोनों के बीच में इतना डिफरेंस है वो आपको याद रखना है. 0 is a whole number
but not a natural number. Every natural number is a whole number, but every whole number is not a natural number. 0 is a rational number because we can write like that. 0 upon 5, it is 0. 0 upon minus 2, it is also 0 mentioned. So you can remember it. You have to remember it. 0 is a rational number because we can divide 0 by non-zero number. वो माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है. There are infinitive rational numbers between two rational numbers. So in rational numbers you have to first remember define. Define is that a number of the form of p by q, where p and q are integers and q cannot be zero, is called a rational numbers. And example is here against u. Okay? Yes. Now clear rational numbers. Now we are talking about the basic operation. Basic operation. Basic operation in maths, that is called the addition, subtraction, multiplication and division. It is a, what is it is? It is basic operation. And from that, for that we have some properties of addition and subtraction, multiplication and division. We have some kind of properties. In 7th standard also we have learned 8 properties. Once again we repeat it, and properties are here. First we are going to learn properties of addition. Closure property for addition. Closure property means, yes, the sum of two rational number is a rational number. The sum of two rational number. Suppose करो कोई दो रेशनल नंबर है. सपोज करो कोई एक x है, दूसरा y है. तो ये दोनों रेशनल नंबर है, तो उसका जो एडिशन x + 5 आता है वो क्या होता है? वो रेशनल नंबर ही होता है. तो ये हुई हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी. कभी कभी ये पूछा जाती है डिफाइन में, तो याद रखना, द सम ऑफ टू रेशनल नंबर इज अ रेशनल नंबर. इफ x and y are two rational numbers, so then x plus y is also a rational number. It is closure property of addition. Clear? Yes. Now commutative property. Commutative property means, that means, yes, commutative मतलब नंबर चेंज होता है. कभी कभी क्या होता है, एडिशन ऑफ रेशनल नंबर इज कम्यूटेटिव. दैट मींस इफ x and y, सपोज करो x and y, ये तो क्या है, कोई रेशनल नंबर है. अब उसको कम्यूटेटिव मतलब क्या करना है, x plus y मतलब आगे वाला नंबर पीछे और पीछे वाला नंबर आगे ले जाते हैं जब y plus x, like that. x plus y is equal to y plus x. कोई रेशनल नंबर है, सपोज करो 2/1 plus 3/1, ये क्या है, एक रेशनल नंबर है. उसकी जगह पे मैं 3/1 plus 2/1 लिखते हूं, तो 2 plus 3 क्या होगा, 5. इधर क्या होगा, 5. तो दैट मींस दोनों का आंसर क्या आता है, सेम आता है. तो इट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन. क्लियर? ओके. नाउ second is associative. Third one is associative property. Third one is associative property. Associative, that means making group. The addition of any three rational numbers, कोई भी तीन rational number हो हमारे पास, is associative. That means x, y and z are any three rational numbers, then you can make group like that. X, y and z. We have three rational numbers suppose. At first we add x plus y, then add z. Once again make a group of x plus y plus z. That's answer is equal. अगर ऐसे कोई तीन रेशनल नंबर होते हैं, उसमें पहले दो का ग्रुप बना के तीसरे को ऐड कीजिए, या तो तीसरा वैसे रख के लास्ट के दो के ग्रुप बना के आप उसमें ऐड करोगे तो क्या होगा, सेम ही आंसर आने वाला है. तो इसलिए कहा जाता है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज फॉर एडिशन. नाउ आइडेंटिटी ऑफ जीरो फॉर एडिशन. आइडेंटिटी ऑफ जीरो. आइडेंटिटी ऑफ जीरो मींस, यस, एडिशन जो होता है कोई भी रेशनल नंबर होता है, उसमें अगर हम जीरो ऐड करें तो क्या होगा, आंसर वही का वो आता है. मतलब दैट कैन नॉट बी चेंज आंसर. द सम ऑफ रेशनल नंबर एंड जीरो इज आल्सो ए रेशनल नंबर. इट इज आवर
identity of zero. Suppose x is one kind of rational numbers. When you add zero, the answer is x. The answer is x. So we can call it x plus 0 is equal to 0 plus x. That answer is also x. मतलब in short कोई भी रेशनल नंबर होता है उसमें हम जीरो ऐड करते हैं तो आंसर क्या आता है? रेशनल नंबर ही आता है. क्लियर? तो इट इज आइडेंटिटी ऑफ जीरो. आइडेंटिटी ऑफ जीरो. नाउ प्रॉपर्टी ऑफ एडिटिव इनवर्स. एडिटिव इनवर्स मोस्ट आइडेंटिटी. एडिटिव इनवर्स ये आपको बहुत अच्छी तरह से दिमाग में रखना है. एडिटिव इनवर्स. That means what? Yes, if we add two same rational numbers having opposite side, the sum is zero. कोई भी दो रेशनल नंबर होते हैं, सपोज करो फर्स्ट रेशनल नंबर हमारा x है, उसका ऑपोजिट क्या होगा? -x. क्लियर? जब इन दोनों को हम करते हैं तो आंसर क्या आता है? जीरो. लाइक दैट x minus x is equal to 0. Clear? So that is the additive inverse. Additive inverse, the negative of x is denoted by -x. Suppose कोई भी रेशनल नंबर हमारे पास -2/5 है, तो उसका एडिटिव इनवर्स लिखना है तो क्या होगा? ये प्लस साइन है तो उसका पॉजिटिव साइन दे दो. तो ये हो गया आपका एडिटिव इनवर्स. Once again -5/1 you can write 5/1. Suppose 7, then you have to write 7 - 7. It is a additive inverse. Additive inverse का मतलब क्या है? ऑपोजिट साइड वाला नंबर. अगर आपको प्लस नंबर दिया है तो आपको उसका एडिटिव इनवर्स लिखने के लिए माइनस लिखना पड़ेगा, या तो फिर आपको माइनस नंबर दिया है तो उसका एडिटिव इनवर्स लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्लस लिखना पड़ेगा. ओनली यू हैव टू चेंज द साइन ऑफ गिवन रेशनल नंबर्स. कोई भी रेशनल नंबर्स आपको दिया गया है उसकी आप सिर्फ साइन चेंज कर देते हो, दैट मींस ऑपोजिट नंबर लिख देते हो, तो वो आपका हो जाता है एडिटिव इनवर्स. आगे एक्सरसाइज में आएगा एडिटिव इनवर्स. नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ सबट्रैक्शन. हमने जो जो प्रॉपर्टीज अभी सीखी, क्लोजर प्रॉपर्टीज, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज, एसोसिएटिव एंड एक्सीडेंस, तो वो एडिशन के लिए ओके है. लेकिन क्लोजर प्रॉपर्टी देखिए तो x and y are two rational numbers, then x and y is rational numbers. ये क्या है? सबट्रैक्शन के लिए लागू होती है. और कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी जो है कम्युनिकेटिव, वो सबट्रैक्शन में नहीं होती. देखो सबट्रैक्शन की बात करें हम तो that means x one kind of rational numbers and y so is not equal to y minus x. So we can say that सबट्रैक्शन में हम देखते हैं तो रेशनल नंबर जो होता है जैसे x plus y is equal to y plus x हमने एडिशन में कर सकते हैं, सबट्रैक्शन में ऐसा नहीं होगा. तो कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी डू नॉट होल्ड फॉर सबट्रैक्शन. रिमेंबर इट, जो कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी है वो सबट्रैक्शन में होल्ड नहीं होती. Associative property is not hold for subtraction, also not hold, because whatever we can write it x minus y minus z is not equal to x minus y minus z. So we can say that associative property is not for subtraction. Once again, an accidence of right identity, the rational number 0 is a right identity. Why? Because x minus 0, so our answer is x. So ये जो 0 को हम माइनस करें या कोई किसी भी रेशनल नंबर में 0 को प्लस करें तो वो तो आंसर वैसा का वैसा रहने वाला है. आगे हमने देखा x plus 0 करें तो x, उसी तरह सबट्रैक्शन में हो सकता है, लेकिन सबट्रैक्शन में क्या नहीं हो सकता? सबट्रैक्शन में कम्युनिकेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी उसके लिए यूज नहीं कर सकते, एडिशन के लिए कर सकते हैं. वैसे ही अगर मल्टीप्लिकेशन की बात करें हम, मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो मल्टीप्लिकेशन में क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी है, बिकॉज़ फॉर मल्टीप्लिकेशन यू नो दैट मल्टीप्लिकेशन we can use closure property. Closure property x and y are two rational numbers, then x multiply y also is a rational number. कोई भी दो rational number का मल्टीप्लाई करे तो उसका जो आंसर आएगा वो क्या होगा? rational number होगा. फिर कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी की बात करें तो ये भी हो सकता है क्योंकि y multiply x is equal to x multiply y. Suppose 2/5 multiply
3/5. So in short 3/5 is multiplied 2/5. इन दोनों का अगर हम आंसर लाएंगे तो दोनों का आंसर क्या होगा 6/25. इसका भी होता है 6/25. सो जैसे हमने एडिशन में ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमने लाए थे वैसे मल्टीप्लिकेशन में भी हम यूज कर सकते हैं. ओके यस. नाउ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो भी हम यूज कर सकते हैं क्योंकि इसमें भी हम ग्रुप बना सकते हैं मल्टीप्लाई में. x multiply y multiply z like that. See here x multiply y and it is multiply with z, so we can make like that group y multiply z. इसका जो आंसर आएगा वो दोनों इक्वल होगा. तो इससे हम ये कह सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं. नाउ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जैसे हमने एडिशन आइडेंटिटी किया था. क्या किया था एडिशन में हमने किया था कि भाई कोई भी रेशनल नंबर होता है उसमें 0 ऐड कर देगा आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता. वैसे जैसे हमने मल्टीप्लाई कोई रेशनल नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करे तो आंसर क्या आता है वही का कोई भी रेशनल नंबर हो उसको अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो उसका आंसर क्या आता है 1 ही आता है. 1 is called the multiplicative identity. Now distributive property of multiplication. Distributive property, it is most important. Distributive, that means we have three rational numbers. Okay, that is x, y and z. हमारे पास ऐसे कोई तीन रेशनल नंबर है तो हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. x is multiply y multiply z. तो we can distribute like that. But यहाँ कोई प्लस है. क्या है प्लस होता है तो उसको डिस्ट्रीब्यूटिव करते हैं. डिस्ट्रीब्यूटिव ऑन एडिशन मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ऑन एडिशन. तो x लाइक दैट x मल्टीप्लाई y प्लस इन सेकंड ब्रैकेट x मल्टीप्लाई विद z. तो ये आंसर हम ला सकते हैं. तो उसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर addition. We can use it. In short, now properties on division. अगर डिवीजन की हम बात करें तो जैसे सब्ट्रैक्शन में होता है वैसे ही होता है. जैसे मल्टीप्लिकेशन में हम वो प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं. If x and y any two rational numbers y is not equal to 0 then x plus x divided y is always a rational number for n. मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो डिवीजन में यूज हो सकती है. क्लियर यस. दूसरी प्रॉपर्टी अगर हम x को 1 से डिवाइड करें तो आंसर क्या आएगा 1 ही आएगा. लेकिन -1 से डिवाइड करें तो आंसर क्या आएगा -1 आएगा. फॉर एवरी नॉन जीरो रेशनल नंबर x डिवाइडेड बाय x इज 1 एंड x डिवाइडेड बाय -x इज इक्वल टू -1. प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. जैसे हमने अभी एडिटिव इनवर्स सीखा वैसे ये मोस्ट आईएमपी है. कौन सा यस मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. मल्टीप्लिकेटिव का दूसरा नाम है रेसिप्रोकल. क्या है रेसिप्रोकल. मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब रेसिप्रोकल. सपोज हमारे पास p/q कोई रेशनल नंबर है तो उसका रेसिप्रोकल लिखना है. मतलब रेसिप्रोकल कैसे लिखते हैं नीचे वाला नंबर ऊपर जाता है ऊपर वाला नीचे आता है. उसको ही हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. इन शॉर्ट p/q है उसका रेसिप्रोकल मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखना है तो क्या होगा q/p. अगर उन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करें हम तो क्या आंसर आएगा और आंसर इज 1. ऐसे कोई दो नंबर जिसका प्रोडक्ट 1 आता हो तो वो क्या है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाता है. इन शॉर्ट किसी भी नंबर का हमें जब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखना होता है तो ये यूज करना पड़ता है. मतलब उसका रेसिप्रोकल लिखना है. So in short, but after studying these properties, we are learn exercise number 1.1 in next lecture.